ने लास्ट टाइम पिक किया था. We wanted to find out the height of tide for Fiddler's Ferry Wharf, which is in ATT Volume 1, number is 456A, on 13 February 1992. So हमने इसका सबसे पहले तो डाटा कैप्चर किया. We went to the geographical index. Geographical index में हमें Fiddler's Ferry Wharf जो है ये मिल गया. हमने इसका नंबर यहाँ से नोट किया. We found out that it's a secondary port. फिर बेटा इसके बाद हम इस नंबर से इसको लोकेट करते चले गए जो हमारे ATT में पार्ट 2 का डाटा दिया हुआ है. सो इस पेज से, दिस वाज पेज नंबर 313, इस पेज से फिर हमने 3 डाटा आइटम्स जो है वो पिक की. एक तो हमने पिक किया स्टैंडर्ड पोर्ट का डाटा विच इज लिवरपूल. लिवरपूल का हमें डाटा यहाँ पे दिया हुआ है ऊपर. दूसरा हमने ये चीज़ यहाँ से पिक करनी है. फिडलर्स फेरी के आगे बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी गई है. यहाँ पे इन्होंने हाइट डिफरेंसेस और टाइम डिफरेंसेस दिए हुए हैं. और तीसरी जो डाटा हमने यहाँ यूज़ करना है वो है सीजनल करेक्शन जो बॉटम में आपको दिख रही है. सो इन तीनों चीज़ों को हम लोग अपनी कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं. सो अप टू हियर एवरीबडी इज क्लियर बेटा? एनी डाउट अप टू हियर? No, sir. Very good, beta. So we picked up this data and जो ये ग्रीन टिक मार्क के साथ आप देख रहे हो इसी डाटा को हम लोग यूज करेंगे when we calculate the height of the tide. और ये डाटा हमने यहाँ पे पिक कर लिया है. This is the data which is required. यहाँ पे जो जोन दिया है ऊपर में UTGMT, this is the time which is kept in the secondary port. So Fiddler's Ferry is keeping UT zone or the GMT zone. Okay. और right. So ये जो बीच में लिखा हुआ है these are the time differences. जो right side में लिखा हुआ है these are the height differences. एंड जो नीचे आपको दिख रहा है दीज आर द सीजनल करेक्शंस. आई थिंक यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था. अब हम यहाँ से आगे चल रहे हैं. ओके, सो अप टू हियर एनी डाउट इन द माइंड बेटा? No, sir. वेरी गुड, क्लियर बेटा. अब जो आगे वर्किंग करूंगा मैं उसमें जो डाटा पिक होगा वो यही 3 आइटम्स पिकअप होंगी बेटा. दीज आर द 3 आइटम्स विच विल बी पिक्ड अप. ये आपको पेज नंबर 313 पे मिल गई हैं. हमने इनको लोकेट कर लिया है. सो जब हम इनकी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बोलूँगा कि हम 313 पेज से ये डाटा पिक कर रहे हैं. यू शुड बी एबल टू पिक अप दैट डाटा. दैट्स ऑल. सो नाउ वी आर प्रोसीडिंग अहेड. लेट्स गो. We will consider 3 days, the day in question, a day before that at the standard port, and a day after that. Now, for the sake of systematic and simplified working, we shall be using a format called as the tidal calculation form or the tidal prediction form, whatever name you want to give it. Now, this format is there in the tide tables itself, in the introductory pages of the tide tables where the examples have been worked. This tidal prediction format is already there in the tide tables, the ones which you will be using in the exam hall, as well as the ones which you shall be using on board the ships. So that means we are going to use the same format in working out the heights and times of high and low water at the secondary port. Only change that has been incorporated is that in this tidal prediction form in your tide tables, you have provision for 1 high water and 1 low water. An extra provision for additional high water and low water has been made. So we have made the provision for 2 high waters and 2 low waters. So if you like this amended form, you can get used to this. Practice this form a few times so that you can first make the form and then start filling in the entries. Okay.
अब बेटा टाइड की वर्किंग करने के लिए हमें एक फॉर्मेट चाहिए होता है। ये जो फॉर्मेट है ये टाइड टेबल्स में दिया हुआ है। कहाँ पे दिया है ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सिलेक्टेड पेजेस हैं एडमिरल्टी टाइड टेबल्स के, जो लेफ्ट साइड में देख रहे हो आप। अगर हम इस पे नीचे आ जाएं, नीचे आने पे आप देखोगे इंट्रोडक्टरी नोट में, ये देखो बेटा, आई एम ऑन दिस पेज नंबर XIV, इंट्रोडक्टरी पेज है ये। इस पेज पे आपको ये वाला टेबल टाइडल प्रिडिक्शन फॉर्म मिलेगा। टाइडल प्रिडिक्शन फॉर्म ये रहा बेटा, ये टाइडल प्रिडिक्शन फॉर्म, और ये एक छोटा सा फॉर्म है, दिस वन। So you can look for it in your tide tables. Let me know when you find it. Is it there? Yes, sir. Very good बेटा। Yes. इसी फॉर्म को हम अपनी कैलकुलेशन के लिए यूज करने वाले हैं। एक चेंज इसमें हमने किया है, इस फॉर्म में सिर्फ एक हाई वाटर और एक लो वाटर बताया है उन्होंने। हाइट के लिए भी एक ही हाई वाटर और एक ही लो वाटर लिखा हुआ है। अब जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं पेपर्स में, उनमें हमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में पूरे डे के टाइड्स को निकालना होता है। तो पूरे डे में 2 हाई वाटर और 2 लो वाटर आ सकते हैं। सो हमने क्या किया है, हमने एक हाई वाटर और लो वाटर की जगह पे, अगर आप राइट साइड में देखोगे तो दूसरा हाई वाटर और लो वाटर ऐड कर दिया है। अगर आप टाइम के नीचे देखोगे तो हाई वाटर, लो वाटर, हाई वाटर, लो वाटर, 4 कॉलम आपको मिलेंगे। इसी तरह से हाइट के नीचे आप देखोगे तो हाई वाटर, लो वाटर, हाई वाटर, लो वाटर। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस। बाकी सारा का सारा फॉर्म बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपको टाइड टेबल में मिलेगा। ओके, पहले स्टैंडर्ड पोर्ट है, यहाँ पे भी स्टैंडर्ड पोर्ट मिलेगा। सेकेंडरी पोर्ट, सेकेंडरी पोर्ट मिलेगा। फिर स्टैंडर्ड पोर्ट के टाइम और हाइट्स हैं, स्टैंडर्ड पोर्ट टाइम एंड हाइट मिलेंगे। सीजनल चेंज, डिफरेंस, सीजनल चेंज, सेकेंडरी पोर्ट, यही सारी चीज़ें आपको यहाँ इस फॉर्म में मिल रही हैं। सो इज दिस फॉर्म क्लियर बेटा? जो ये टाइडल प्रेडिक्शन फॉर्म मैं दिखा रहा हूँ अभी आपको स्क्रीन पे, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. इसे कैसे फिल करना है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। जो फॉर्म यहाँ आप देख रहे हो, इस फॉर्म की एक फ़ोटो मैं यहाँ चैट में डाल रहा हूँ ताकि आप इसे डाउनलोड कर सको एंड यू नो हाउ टू रेफर टू इट। जब आपको इसकी ज़रूरत पड़े आप इसको रेफर कर सकते हो। नहीं बेटा, ये आपको खुद से बनाना होगा। आपको टाइड टेबल दिया रहेगा, और टाइड टेबल में जो ये फॉर्म लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो मेजेंटा कलर के मार्जिन में, जो अभी हमने टाइड टेबल के अंदर देखा था, वो आपको मिलेगा, दैट इज देयर। आप उसको देख के अपना ये फॉर्म बना सकते हो, पर आपको ये आंसर शीट में बनाना पड़ेगा बेटा। Okay, sir. Okay. ओके, इन अदर वर्ड्स आपको ये याद करना पड़ेगा कि ये टेबल कैसे बनाते हैं। आप इसकी हेल्प ले सकते हो, जो इंट्रोडक्टरी पेजेस में टेबल दिया गया है उसकी हेल्प ले सकते हो, पर उसे देख के आपको ये बनाना आना चाहिए। ओके, वंस यू गेट प्रैक्टिस, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बेटा। हॉरिजॉन्टल लाइंस तो आपकी आंसर शीट पे होंगी ही, सिर्फ आपको वर्टिकल कॉलम बनाने हैं। सो आप इसे स्केल के साथ जल्दी से ये वर्टिकल कॉलम बना सकते हो। जब ये वर्टिकल कॉलम बन जाएंगे आपका फॉर्म रेडी हो जाएगा। ओके, Now we go step by step, filling up the tidal prediction form, and we learn about each entry. We start with the upper part of the form. Where do we get this data from? We had identified 3 pieces of data from the part 2 page, which was to be used. One was about the standard port, which is out here, and the other was about the secondary port, that is Fiddler Ferry Wharf. From this, we complete this part of the tidal prediction form. So what is the name of the standard port? Name of the standard port is Liverpool. What is its Liverpool. number? 452. What do we need to calculate? We need to calculate the low water and high water time and height. Then we have the name of the secondary port. What is the secondary port? It's Fiddler Ferry Wharf, whose number is 456 alpha. So we complete this part. Then the date.
date in question is 13 February 1992. It's the date at the secondary port. Then we have the time zone. This is the time zone of the secondary port. So the times that you shall get, you will get in the time zone of the secondary port, and in this case, the time zone is same as GMT. ओके सो बेटा ये जो फॉर्म है ये अब क्विकली आप अपनी नोटबुक्स में ड्रॉ कर लो एंड उस पे हम ये डाटा जो है ये फिलअप करना शुरू कर देंगे लुकिंग फ्रॉम द टाइड टेबल्स. Let me know once you have made the form. Boxes, we have been able to fill up the upper part of the tidal prediction form. The next thing in the tidal prediction form is the time and height of high water and low water at the standard port. So now for standard port, we already know where does the information exist. It exists in part 1. So we go to part 1 for Liverpool, and the predictions for Liverpool are captured on page number 94. You can see it here. ओके सो अब बेटा आपको क्या करना है, आपको ये लिवरपूल पोर्ट के पेज पे जाना है विच इज पेज नंबर 94 और 13 फरवरी 1992 इसका डाटा जो है वो ढूंढना है. जस्ट गो देयर एंड लुक फॉर दैट डाटा. मिल गया सर. Very good beta, let's see now. So straight away you can go to page 94 of ATT volume 1 and you shall find the daily predictions for Liverpool. At secondary port we are interested in the information on 13th February. As already discussed, we shall extract information for a preceding day also, that is 12th February, and the following day also, that is 14th February. So here are the tidal predictions for Liverpool on 12th February, 13th February, and 14th February. So beta, this is the data which you are seeing on page number 94. 3 डेट्स हमने यहाँ पे लिख ली हैं. अगर रिक्वायर्ड है तो हम पिछली डेट या आगे वाली डेट का टाइम भी पिक कर सकते हैं. कैसे देखना है अभी हम देखेंगे. Now, if you see the time difference between the standard and the secondary port, it's plus. Obviously, then we just have to evaluate if any of the tides of 12th, when allowed with the time difference, would take it to the 13th day of February at the secondary port or not. Obviously, the following day does not make any sense. Now, when we inspect this, we find that there is low water at Liverpool at 23:29 on 12th of February. Obviously, the time difference for low water is plus 5 hours, something almost plus 5 hours. So when we shall add plus 5 to it, it will automatically take us to 13th day of February at the secondary port. So that means the tides which we'll have to consider at the standard port are this low water at 23:29 on 12th February. सो बेटा ये चीज आपको समझ में आई कि हमने 12 फरवरी को लास्ट वाला जो टाइड है इसे क्यों पिक किया है. नहीं सर, एक बार बता दीजिए. ओके बेटा, जब आप यहाँ पे ये जो राइट साइड में डाटा हमें दिया है फिडलर्स फेरी के आगे, आप लो वाटर के नीचे जब टाइम डिफरेंसेस को देखते हो तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे प्लस 5 आवर 40 मिनट से लेके प्लस 4 आवर 50 मिनट तक की वैल्यू ऐड करनी पड़ सकती है. राइट बेटा? ओके सर. यस सर. अब बेटा तो सर हमने ये पीछे वाला क्यों नहीं लिया, इसका जो वाटर्स है जिसमें +1 और +1 15 है. ओके, ये हाई वाटर के नीचे लिखा है बेटा. देखो ये हाई वाटर के नीचे लिखा है और 12th को लास्ट वाला जो टाइड है वो लो वाटर का टाइड है. देखो 2.9. तो सर हमें हमेशा एक लास्ट डेट का सबसे लास्ट वाला देखना पड़ेगा, लो है या फिर हाई है. राइट, ये भी देखना पड़ेगा बेटा. हम 1645 को भी चेक कर सकते हैं.
1645 हाई वाटर है। ओके अब हाई वाटर की करेक्शन कितनी है? 1 घंटा और 1 घंटा 15 मिनट, राइट। यस अब 1645 में 1 घंटा या 1 घंटा 15 मिनट ऐड करेंगे तो वो 13th पे तो नहीं जाएगा, वो तो 12th में ही रह जाएगा। यस सर इसलिए हमने 1645 को पिक नहीं किया है। ओके सर अगर लेट अस से यहाँ पे करेक्शन होती, इंस्टेड ऑफ +1 आवर यहाँ पे होता +10 आवर, राइट। अगर +10 आवर होता तो हम 1645 में 10 घंटे ऐड करते तो वो भी 13th में आ जाता, तो फिर हम 1645 को भी पिकअप करते। सर हमें 13 को निकालना है, तो सर हम 13 की डेट क्यों नहीं ले रहे हैं? बेटा जब आप, हम तो 13th की डेट ही ले रहे हैं, पर ये 13th की डेट कहाँ पे चाहिए आपको? सेकेंडरी पोर्ट पे या स्टैंडर्ड पोर्ट पे? सर सेकेंडरी पोर्ट पे। सेकेंडरी पोर्ट पे चाहिए। ये जो 12 13 14 के बॉक्सेस लिख रखे हैं, ये कौन सी पोर्ट के हैं? ये सर प्राइमरी पोर्ट हमारा फर्स्ट। स्टैंडर्ड पोर्ट के हैं। अब जब आप स्टैंडर्ड पोर्ट के 23 29 पे करेक्शन लगाओगे +5 घंटे की, तो सेकेंडरी पोर्ट में ये 12 तारीख में रहेगा या 13 में आ जाएगा? 13 में सर। इसीलिए इस वैल्यू को पिक कर रहे हैं बेटा। ओके कोई भी स्टैंडर्ड पोर्ट की वैल्यू अगर सेकेंडरी पोर्ट में 13 तारीख 000 से लेके 2359 तक आ रही है तो उसे हम पिक करेंगे। सर मेरे को जैसे डाउट आ रहा है, जैसे कि अगर 13 को अगर हम ये 12 19 की वैल्यू जो है हाँ 3.0, अगर राइट। इसमें भी अगर हम अगर प्लस अगर 5 करते हैं तो भी तो ये सर 13 में ही रहेगी वैल्यू। हाँ बेटा, इनको तो करेंगे ही करेंगे, ये जो 13th वाली तीनों हैं इनको तो करना ही है पिक। ओके, इनको छोड़ना नहीं है, अभी मैं बता रहा हूँ, आप आगे देखो। ओके सर, इन एडिशन टू ये लास्ट वाले डेट की करेंगे। ओके राइट राइट बेटा, राइट राइट। सर ये कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा सर ये। अभी समझ में आएगा बेटा, अभी समझ में आएगा, रुको 1 मिनट देखो। सर ऐसे कोई भी डेट जंप नहीं कर रही होती तो फिर हम सिर्फ 13th की लेते हैं ना सारी वैल्यूज? बिल्कुल बेटा, अगर कोई जंप नहीं हो रहा होता तो सिर्फ 13 की वैल्यू को ही उठाते। ओके सर। अभी देखो, अभी समझ में आएगा आपको। And we enter the time out here and how height under the height. You can see the entries coming in. First height that shall be considered would be low water of 2.9 meters on 12th February at 23:29 at Liverpool. Obviously, then we have these tides coming in. We have high water at 0526. So high water at 0526. The height is 7.4 meters. You can see how the form can be conveniently then filled in. Then we have a low water at 1219. Height is 3 meters, so that shall come in here. Then we have a high water at 1814, so that time comes here, and the height of 7.5 comes here. ओके सो अब बताओ बेटा, अब आपको ये समझ में आ रहा है जो हमने ये वैल्यूज यहाँ फिलअप की हैं? सर अभी तो 13th में 3 वैल्यूज है ना, अगर यहाँ पे अगर 4 वैल्यूज होती राइट। तो फिर हम सिर्फ 13th की लेते हैं, क्योंकि हमें लो हाई की वैल्यूज चाहिए ना। ओके बेटा, अगर 13th में 4 वैल्यू होती, लेट अस से 13th की लास्ट वैल्यू जो है ये 2330 की आ रही है। मान लेते हैं यस कि यहाँ पे 2330 की एक और वैल्यू लिख रखी है। अब आप देखोगे कि 2330 में जब मैं 5 घंटे करूंगा तो वो तो 14th में चली जाएगी ना। सेकेंडरी पोर्ट के लिए 2330 में जब 5 घंटे के आसपास ऐड होगा तो वो तो 14th डेट में चली जाएगी ना बेटा, सेकेंडरी पोर्ट में। ओके ओके सर ओके। सो हम उसे छोड़ देते बेटा, क्योंकि हमें तो सिर्फ 13th का ही टाइम चाहिए। ओके क्लियर बेटा? यस। ओके सो एक दिन में और सर आपको जैसे कि 4 से ज्यादा वैल्यूज नहीं मिलेंगी। सर जैसे कि टेबल में हम जब बना रहे थे डायग्राम तो हाई वाटर लो वाटर ऐसे स्टार्ट कर रहे थे,
तो इस हाँ केस में बेटा, हमने लो वाटर फिर हाई वाटर ऐसे स्टार्ट किया है, वो भी इसी दैट्स चीज की राइट, वजह से, क्योंकि हम दैट इज राइट राइट राइट। ये बेटा आपको लो वाटर या हाई वाटर कहीं पे भी डालना पड़ सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन के स्टैंडर्ड पोर्ट में पहले क्या हो रहा है। अगर स्टैंडर्ड पोर्ट में पहला टाइड लो है तो हम यहाँ लो से शुरू करेंगे, और अगर स्टैंडर्ड पोर्ट में पहला टाइड हाई है, जैसे 23-29 पे अगर हाई होता यहाँ पे, तो हम पहला वाला हाई ही लिखते अपने टेबल में। सो इनको आप टाइड को देख के ही फिलअप करोगे कि पहले लो फिलअप करना है या हाई। ओके सर। सर जैसे ये टेबल है नीचे, इसमें लिखा हुआ है लिवरपूल के सामने 000 एंड 1200, देन फिर स्टार्ट है 06 से 1800, राइट। सर 2 से 14। सर इसमें आपने 0540 ही क्यों उठाया है सर? ओके बेटा, कुछ भी उठा सकते थे, मैंने अप्रोक्सीमेटली अंदाज़ा लगाया कि ये 540 है और ये 450 है। अंदाज़ा 5 घंटे का करेक्शन आ रहा है ना बेटा, एवरेज। ओके सर। एग्जैक्ट कितना एडिशन होगा वो तो हम अभी देखेंगे, पर हमने ओके। यहाँ से गेस लगाया कि अबाउट 5 घंटे का पीरियड ऐड हो रहा है। तो मैं 23-29 में जब 5 घंटे ऐड करूंगा तो वो तो 13th में चली ही जाएगी। 13 में जाएगा, ठीक है। राइट। ओके ओके, सो चलें बेटा आगे यहाँ से। सर ये थोड़ा क्लियर नहीं हुआ सर, ये स्टैंडर्ड पोर्ट का सर। बेटा आपको मुझे बताना पड़ेगा कि क्या चीज़ क्लियर नहीं हुई बेटा। सर ये जो टाइम की टेबल बनी है सर, ये नहीं क्लियर हो रही सर। ठीक है, तो क्या चीज़ है वो जो क्लियर नहीं हो रही बेटा, बताओ मुझे कि सर आपने ये ऐसा क्यों किया, वो बताओ। सर ये जैसे 12 #2329 सर, सर मतलब ऐसा सर जब सेकंड प्राइमरी पोर्ट्स में करते थे तो उसमें ऐसा नहीं होता था सर। अभी सर बेटा ये सेकेंडरी पोर्ट की टाइड कैलकुलेशन प्राइमरी से बिल्कुल अलग है। ओके, प्राइमरी में तो हम लोग शैलो वाटर में स्विमिंग कर रहे थे। सेकेंडरी पोर्ट की जो कैलकुलेशन है वो तो डीप वाटर में जंप मार दिया है अब बेटा। ओके, सो दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ओके सर, ओके सर। अभी एक एग्जांपल और हो जाएगा तो सर शायद क्लियर हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, एग्जाम्पल ही करेंगे अभी, इसके बाद और भी करेंगे, डोंट वरी। अब यहाँ तक सब क्लियर है बेटा, ये पहली लाइन फिलअप हो जाएगी अप टू 7.5। यस सर। वेरी गुड, अब हम आगे चल रहे हैं यहाँ से, लेट्स गो। Now we have learned to fill up this part of the tidal prediction form. So this part of the form we have already filled in. What is next in the tidal prediction form is something called as seasonal change or seasonal variance of the standard port. Now we have to apply the seasonal variance to the height of tide at the standard port. Now, when we have these predictions of heights, which are tabulated here as 2.9, 7.4, 3, and 7.5 at Liverpool, they contain something called as the seasonal change. Now, this seasonal change for Liverpool is already included in these heights. Now, the seasonal change at Liverpool may not be the same as the seasonal change at the secondary port. Therefore, what we have to do is we have to remove the component of seasonal change from the predictions of height for Liverpool, and then subsequently at a later stage, apply the seasonal change or seasonal variance for the secondary port. When we say we have to remove the seasonal change for the standard port, it means we have to algebraically subtract. Now, this seasonal change was the third piece of information which was identified on the Part 2 page. You can see it is given on monthly basis. And here we have the number of the port. So for port numbers 394 to 398, these shall be the seasonal changes based on the month in question. So for standard port, I repeat again, we have to algebraically subtract the seasonal change for the standard port. Why? Because we want to remove that component. So
What is the number for Liverpool? Now you'll understand why this number was documented here, so that we don't have to go back and forth. Liverpool is 452. So when we go here, we identify where does 452 lie. It will lie in the range of 445 to 464. The month in question is February. Month in question is February. And what do we identify? The seasonal correction for Liverpool is 0. That means we will algebraically subtract the seasonal correction. Now, let me make it very clear. Had this value been 0.1 plus 0.1, then that would have been minus plus 0.1, that means minus. If this value had been minus 0.1, then that minus 0.1 multiplied with this already pre-existing minus here would make that as plus 0.1. So please remember, the seasonal correction for the standard port is to be algebraically subtracted. In this case, though it is 0, so it may not make any difference, but it's an important point to keep in mind. So we apply the seasonal correction for all the 4 tidal heights that we had for the standard port. So बेटा आप मुझे ये बताओ कि ये चीज समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट आ रहा है? सर ये इसको जैसे correction हमेशा सब्ट्रैक्ट ही करेंगे हम। हमेशा बेटा, हमेशा इसको सब्ट्रैक्ट ही करेंगे। मींस हमने ये माइनस तो फॉर्म में ही लगा देना है। जो भी वैल्यू होगी, अगर वो प्लस हुई तो माइनस के साथ मिलके वो माइनस हो जाएगी, अगर वो माइनस हुई तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। सही है सर, थैंक यू। और बताओ बेटा, और डाउट? नो सर। वेरी गुड, सो लेट्स मूव अहेड। And they have to be algebraically subtracted. What is the next in the tidal prediction form? It's the differences. What does it mean? Difference in time of high and low water between secondary and standard port, which shall be called as time difference, figuring out here. The other is difference in the height of low and high water between secondary and the standard port, which shall be referred to as height difference, figuring out here. How do we get these two values? We use the data on the top of the subsection for the standard port, which we are already familiar with now, and also the data for the secondary port from part 2. Both these are from the part 2 of the ATT. And in this, what do we see? This part of the information, this part of the data contains what we call as the time difference between the standard port and the secondary port. Now, in this time difference, there are 2 distinct parts. These 2 columns here talk about the time difference for high water, and the other 2 talk about the time difference at low water. So high water, let's deal with the high water time difference first out here. Now here we see that if the high water at Liverpool is either at 000 hours or 2400 hours and 1200 hours, the time difference at Fiddler would be plus 1 hour. If the high water at Liverpool is is 0600 hours or 1800 hours, the time difference is plus 1 hour 15 minutes. If the high water at Liverpool is at any other time than these 4 listed timings, then you have to interpolate in the relevant interval. There is no extrapolation required because these intervals cover all the 24 hours, 0000 hours to 0600 hours, 06 to 1200 hours, 1200 hours to 1800 hours, and 1800 hours to 2400 hours. So there is no need for extrapolation and no extrapolation to be done, only interpolation in the relevant interval. What does it mean? Let's identify the first high water that we have at Liverpool. First high water is at 526. 0526 lies in the interval of 000 hours when the time difference is plus 1 hour. I've calculated it here. And 0600 hours when the time difference is plus 1 hour 15 minutes. Our high water time lies in between, that is 526. We do linear interpolation.
when the high water time changes by 6 hours, the time difference changes by 15 minutes. And for a change of 5 hours, 26 minutes from here, we get 14 minutes, 1 hour, 14 minutes of time difference. And this plus 1 hour, 14 minutes of time difference gets documented here. ओके सो बेटा ये इंटरपोलेशन आपको समझ में आई? एनी डाउट लेट मी नो. नहीं सर, ये समझ नहीं आया सर स्टेप। ओके बेटा मैं सर समझाता हूँ अभी. बेटा अगर लिवरपूल में 0000 पे हाई वाटर है तो फिडलर फेरी में टाइम डिफरेंस कितना होगा? प्लस 1 आवर 00 मिनट का टाइम डिफरेंस होगा. ओके हाँ जी सर। अगर लिवरपूल में हाई वाटर 0600 पे है तो फिडलर फेरी के लिए टाइम डिफरेंस हो जाएगा 1 आवर 15 मिनट. ओके जी सर। अगर हाई वाटर की टाइम 0000 और 0600 के बीच में आएगी तो हमें 1 घंटा और 1 घंटा 15 मिनट के बीच में इंटरपोलेशन करनी पड़ेगी. जैसे हमारा टाइम आ रहा है हाई वाटर का 5:26 का. इट इज बिटवीन 0 एंड 06 राइट. ओके सो हमने यहाँ लेफ्ट साइड में देखो लिख लिया है 000 के लिए टाइम डिफरेंस है 1 घंटे का. 6 बजे के लिए टाइम डिफरेंस है 1 घंटे 15 मिनट का. सो हाई वाटर के टाइम में अगर 6 घंटे का फर्क आता है तो टाइम डिफरेंस में कितना फर्क आता है? 15 मिनट का फर्क आता है बेटा. राइट सही है। अगर 5 घंटे 26 मिनट का टाइम डिफरेंस होगा तो सेकेंडरी पोर्ट के टाइम में कितना फर्क आएगा? 14 मिनट का फर्क आएगा. सो हमने यहाँ पे 0114 का इंटरवल लिख दिया है. आप समझ में आया बेटा? जी सर क्लियर है सर। ओके तो ये आपको कैलकुलेटर में करना पड़ेगा. 6 घंटे के लिए डिफरेंस है 15 मिनट का. 1 घंटे के लिए डिफरेंस हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 15 और 5:26 के लिए हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 526. तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 14 मिनट. अगर ये डेसिमल में आए तो इसे नियरेस्ट मिनट में राउंड ऑफ कर देते हैं. ओके बेटा क्लियर? सर सो हमने अब आप पहले ये लो वाटर का क्यों नहीं लिखा? से अगेन बेटा. हम पहले हाई वाटर का निकाल रहे हैं इसमें सेकेंडरी पोर्ट पे। हमने ओके पहले लो वाटर का क्यों नहीं निकाला सर? बेटा आप लो का भी निकाल सकते हो. सर ने क्या किया है कि यहाँ जो पहली वैल्यू हाई वाटर की आई उसे ले लिया पहले. आप चाहो तो पहले लो वाटर का भी निकाल सकते हो. अप टू यू. ओके सर। ओके अब बेटा इसे कैलकुलेटर में करके भी देख लो. ये सबको 14 मिनट्स मिल रहा है. अगर किसी को उसमें भी डाउट आ रहा है तो मुझे बताओ बेटा. उसके बाद आगे बढ़ेंगे क्योंकि आगे यही इंटरपोलेशन दोबारा हमने और चीज़ों के लिए भी करनी है. यस सर सही है. ओके बेटा ऑल राइट. सर अगर हाई वाटर का टाइम 6 से 12 के बीच में पड़ता तो फिर कैसे करते सर? ओके ये देखो बेटा जो दूसरा हाई वाटर है वो 1814 है. ठीक है तो यस सर। इसे कैसे करेंगे अभी हम देखेंगे. इसके लिए हम लोग 1800 की वैल्यू और 0000 की वैल्यू इन दोनों के बीच में इंटरपोलेशन करेंगे. नहीं सर मैं कहता 0600 और 1200 के बीच में हाई वाटर होता तो फिर कैसे करते सर? ओके बेटा तो भी बहुत आसान है. 6 बजे के लिए टाइम डिफरेंस कितना है? 1:15 का. 12 बजे के लिए टाइम डिफरेंस कितना है? 1:00 का 0100 का. हम इन दोनों के बीच में इंटरपोलेशन करते 6 to 12. ओके सर। ओके बेटा ओके लेट्स गो नाउ. हम आगे बढ़ रहे हैं. As you can see.
shall be reinforced when we consider the next high time, high water time. What is the next high water time at Liverpool? Please talk to yourself silently as the video is playing. I'm sure you'll agree that the next high water at Liverpool is 1814. You can see on the slide it being circled. 1814 shall lie between which interval? 1800 hours to 2400 hours. That is 000 hours. So that means the interpolation has to be between high water at 1800 hours when the time difference is plus 1 hour 15 minutes, and high water at 2400 hours or 000 hours when the time difference is plus 1 hour. And what is the time of our high water? It's 1814, 14 minutes after 1800 hours. So the time difference reduces by a minute and the time difference becomes plus 1 hour 14 minutes, which gets documented here. So बेटा ये दूसरी interpolation everybody okay up to here बेटा, कोई doubt तो नहीं है? नो सर। चलें आगे बेटा, लो वाटर की इंटरपोलेशन करें? यस। वेरी गुड। Same concept can be reinforced and revised as we discuss the time difference for low water. The low water time difference is captured in the two columns bound by this green box. What is our first low water? Our first low water you can see is 1219. If you come here, which is the relevant interval for 1219, relevant interval is 0700 to 1400 hours. When it is 0700 hours, the time difference is plus 4 hours 50 minutes. When it's 1400 hours, the time difference happens to be plus 5 hours 40 minutes. When the low water is at 1219 as per the question, and obviously we do the linear interpolation between these ranges and in this interval, and we get the time differences plus 5 hours 28 minutes, which we document out here. Okay, so just have a look at this interpolation also beta. Let me know if any doubts are there. Is it okay beta? Interpolation okay? Yes, sir. Okay beta, very good. Please talk to yourself and find out which is the time for next low water. Surely 2329. Which interval does it fall into? It falls in the interval of 1900 hours to 0200 hours. 1900 hours, it's plus 4 hours 50 minutes. 0200 hours, it's plus 5 hours 40 minutes. So for a change of time by how many hours? It's you can see 5 plus 2 7 hours. It is changing by 50 minutes. What is the time of our low water? 2329. For that, time difference by linear interpolation comes to plus 5 hours 22 minutes, and that gets captured out here. So this was the last interpolation for low water beta. So you can try this out on the calculator.
हो गया सर। Yes, sir. Clear Sir, है. सर ओके ये बेटा, लास्ट वाली इंटरपोलेशन में 04 आवर्स 36 मिनट्स नहीं होगा सर? बेटा आप इस चीज़ का ध्यान रखना। देखो 1900 से 2 बजे तक का टाइम है, 7 घंटे की ड्यूरेशन है, एंड 450 से 540 50 मिनट का इंटरवल है। ओके, तो जब आप इंटरपोलेट करोगे, जिस भी तरफ से इंटरपोलेट कर रहे हो बेटा, अगर आप 1900 से डिफरेंस ले रहे हो तो उसे 450 में अप्लाई करना है, और अगर आप 0200 से इसका डिफरेंस लोगे तो उसे 540 में से अप्लाई करना है। ओके ओके, ओके बेटा, क्लियर? यस सर, क्लियर सर, क्लियर। वेरी गुड बेटा, चलो आगे बेटा। So what have we learned on this page is to calculate the time differences. And again, I repeat, for time differences, you shall interpolate in the relevant interval. No extrapolation is allowed. The time difference so obtained will automatically account for the time differences in high and low water, together with any time zone difference between the standard and the secondary port. Having got the time differences, we now learn to get the height differences. That means the difference in heights of high and low water between the standard and the secondary port, which if applied to the height at the standard port shall give us the height of high and low water at the secondary port. This information is also picked up from the same data from where the time differences were picked up. Needs no explanation. Now in this data, this part of the data gives us the height differences in meters. In this also, the first two columns, mean high water spring and mean high water neap, shall give us the height differences for high water, and mean low water neaps and mean low water spring shall give us the height differences at low water. Let's first deal with high water. The high water height differences shall be dealt with this information in the orange box. What does it mean? It means that if the high water at Liverpool is 9.3 meters high, then the height difference at Fiddler will be minus 5.9 meters. That means height of high water at Fiddlers then would be 9.3 meters minus 5.9 meters. Likewise, if the high water at Liverpool is 7.4 meters high, the height difference at Fiddler shall be minus 6.3 meters, which if allowed to the height at Liverpool, shall then take us to the height at Fiddler. If the high water at Liverpool lies between this range, that means 7.4 to 9.3 meters, we shall linearly interpolate. If the high water at Liverpool is either greater than 9.3 meters or less than 7.4 meters, we shall linearly extrapolate. So please remember, for time differences, neither there was a need nor was the extrapolation allowed. For height differences, interpolation and extrapolation both may be linearly carried out. Let's find out the height difference for high water in our case. We have
When mean high water spring is 9.3 meters, the height difference is minus 5.9. When mean high water neap is 7.4 meters, the height difference is 6.3 meters. If you see, I have intentionally left spaces here. Why? Because our high water may lie within this range, may lie outside on this side, or may lie on outside on this side. What is our first high water? It's 7.4. And what do we find? Incidentally, mean high water needs is same as the high water in our case. So obviously the height difference shall be minus 6.3 meters. So minus 6.3 meters gets documented here. Okay, so beta, is this clear? Our high water also was 7.4. So 7.4 के नीचे जो correction थी वो सीधा हमने pick कर ली and no interpolation or extrapolation was required. Yes, sir, clear. Okay, very good beta. Let's go. What is the height of our other high water? 7.5. Where would 7.5 fall? It shall fall between 7.4 and 9.3. So we shall linearly interpolate from between minus 6.3 to minus 5.9. And if you do the linear interpolation, you'll find that the height difference is minus 6.3 only if rounded off to one decimal place. So we shall put this out here as minus 6.3. So beta, this is also clear. Interpolation between 7.4 and 9.3. Yes, sir. Okay, very good beta. Let's proceed ahead. The next two columns here, so this part is not used in this case, so we can just leave it blank. Next two columns here deal with the height difference at low water bound by the green box. So we have, if the low water at standard port is its height is 2.9, that is mean low water neaps, the height difference is minus 2.4. When it's mean low water spring, which is 0.9 meters high, then the height difference is 0.4. Again, we have left options of putting in our required values either to the left of this low water neaps, to the right of low water spring, or in between the two. What is our first low water value? It's 2.9. 2.9 shell incidentally happens to match with mean low water neap. So the difference is minus 2.4. What is our other low water value? Height. It's 3 meters. You can see the 3 meters here shall lie outside or on the higher side of 2.9. And we shall extrapolate. And when we extrapolate this, you see 0.9, it was minus 0.4. For 2.9, it was minus 2.4. And when the height of tide is 3 meters, then the difference becomes minus 2.5. I hope the extrapolation issue is clear through this particular scenario. Okay, so बेटा ये चीज यहाँ पे अलाउड है अगर आपकी हाइट, टाइड की जो हाइट है वो रेंज से बाहर चली जाती है. जैसे इस केस में जो 3 मीटर थी वो हमारी रेंज से बाहर चली गई. रेंज थी 0.9 टू 2.9. सो अगर ये रेंज के बाहर चली जाती है तो हम लोग एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं. सो हमने माइनस 0.4 माइनस 2.4 को जब एक्स्ट्रापोलेट किया तो हमारा आंसर आ गया माइनस 2.5. सो इज दिस क्लियर बेटा? Yes, sir. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. लेट्स प्रोसीड अहेड नाउ. सर ये वैल्यूज कौन सी थी सर? हमने 3 के लिए अगर 3 मीटर पे निकालना है, हमारे पास 0.9 और 2.9 की वैल्यूज थी, तो 3 के लिए हम कहाँ से देखेंगे वैल्यूज? बेटा ऐसे देखेंगे 0.9 और 2.9 में कितना चेंज आया? 2 मीटर का चेंज आया. करेक्ट? यस सर. जो हमारी करेक्शन थी माइनस 0.4 टू माइनस 2.4, इसमें कितना चेंज आया? इसमें भी 2 मीटर का चेंज आया. सो 2 मीटर हाइट के लिए 2 मीटर करेक्शन का चेंज आ रहा है.
अब यहाँ पे हाइट में कितना डिफरेंस था? 2.9 to 3.0, 0.1 का डिफरेंस था ना बेटा? यस सर। तो करेक्शन में भी 0.1 का ही डिफरेंस आएगा। तो हमने 2.4 में 0.1 का डिफरेंस अप्लाई किया, हमें 2.5 मिल गया। ओके सर। ओके, लेट्स गो। 0.5 gets captured out here, and that gives us the height difference in the heights of low and high water between Liverpool and Fiddler's Ferry Wharf. Next is to algebraically add the seasonal correction or seasonal variance or the seasonal change for the secondary port. Why we are saying algebraically add? Because we had already removed the component of seasonal change for the standard port. By algebraically subtracting, you could see this minus sign already in place. And now we have to include the seasonal change for the secondary port. So it's already with plus sign out here. Algebraically add. So if the correction is negative, it becomes plus into minus as negative. If the correction is positive, it remains plus into plus as positive. So it's algebraically added. So please remember, seasonal correction for the secondary port is to be algebraically added. Seasonal correction for the standard port here was algebraically subtracted to remove the component. And where do we get the seasonal change for secondary port? From the same seasonal correction information, which is shown on the screen here. How do we enter it? We go by the port number. What is the port number for the secondary port? It's 456A. So we go where? It is between 445 and 464. And what's the month? It's February. And what's the seasonal correction for Fiddler Ferry Wharf? It's again incidentally 0. So we apply the seasonal correction. In this case, algebraic addition or subtraction may not make any difference, but please remember, the standard port seasonal correction was algebraically subtracted. The seasonal change correction for secondary port is algebraically added. We apply the seasonal change for the secondary port out here. So we are towards the end of the voyage, where we are now in a position to get the time and heights of high and low water at Fiddler Ferry Wharf. We apply these differences and the corrections as tabulated. And when we apply these, we get this low water at 0451, then high water at 640, low water at 1747, high water at 1928, and height of low water 0.5 meters. This high water height is 0.1 meters. This low water is 0.5 meters high, and this high water is 1.2 meters high. How do we correlate these timings and heights? You can see the predictions at Fiddler Ferry Wharf on 13 February shall be then. When it is 451, 0451, it's low water with a height of 0.5 meters, which comes out here, you can see. When it's high water at 640, the height is 1.1, which shows up here. When it's low water at 1747, the height is 0.5 meters, and that shows up here. And lastly, we have a high water at 1928, when the high water height becomes 1.2 meters, and that shows up here. What do we see in this case? At Fiddler Ferry Wharf on 13 February, at 0451, we have low water of height 0.5 meters, high water at 0640 of height 1.1 meters, low water at 1747 hours of 0.5 meters, and high water at 1928 of 1.2 meters high. Okay. So just look at this working, beta. Let me know any doubts coming in your mind now. Clear, sir.
सर ये हाइट ऑफ टाइड माइनस भी आ सकती है क्या कभी? बेटा यूजुअली आती नहीं है, इट इज नॉट ए नॉर्मल सर्कमस्टेंस, बट यस पॉसिबिलिटी इज देयर, आ सकती है। अगर वो माइनस आए तो उसका मतलब है कि सी वाटर का जो लेवल है वो 4 डेटम से नीचे चला जाएगा। ओके सर। ओके, नॉर्मल आपको मिलेगी नहीं, 99% ऑफ द टाइम इट विल बी प्लस। ओके सर। ओके, और कोई डाउट बेटा? क्लियर है सर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। Through this example, what we have learned is how do we get the time and heights of high and low water at secondary ports for ATT volume 1. Well, students. Okay beta, so this was the example which we worked out. So आप बेटा अब इसको खुद दोबारा से वर्कआउट कर सकते हो, यू कैन वर्क इट आउट अगेन विदाउट सीइंग द सॉल्यूशन, so this will strengthen the procedure in your mind. So this completes our tide calculation for ATT volume 1. अब बेटा एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, दिस इज द क्वेश्चन।